વિજલપોરમાં બીમારી મટાડવાના બહાને ધર્માંતરનો ખેલ ખેલાતો હોવાની ઘટના સામે આવી છે ને જેમાં હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો સાયકલ મીડિયા સંચાલિત ઝટપટ ન્યૂઝ અને નવસારી લાઈવ। નવસારીના વિજલપોર વિસ્તારમાં એટલે કે નવસારીના શહેરી વિસ્તારમાં બીમારી મટાડવાની લાલચ આપીને હિન્દુ પરિવારોને ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કરવાનું એક કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું છે। સ્થાનિક હિન્દુ સંગઠનોએ આ બાબતે ચોક્કસ બાતમી મળતા તેઓએ સ્થળ પર જઈ આ પ્રવૃત્તિને અટકાવી હતી અને આ સમગ્ર ઘટનાથી પંથકમાં ભારે હોબાળો મચ્યો હતો। વિજલપોર પોલીસ પહોંચી હતી અને મામલાને થાળે પાડ્યો હતો। વિજલપોરના એક વિસ્તારમાં કેટલાક પાદરીઓ દ્વારા તેમના સાથીદારો દ્વારા છેલ્લા કેટલાય સમયથી ગરીબ અને શ્રમિક પરિવારોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા હતા। ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવાથી ગંભીર બીમારીઓ અને ઘરની આર્થિક તકલીફો દૂર થઈ જશે તેવી લાલચ આપીને લોકોને ભ્રમિત કરવામાં આવ્યા હતા। ગઈકાલે રાત્રે એક ઘરમાં આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ અંગે જાણ થતાં હિન્દુ સંગઠનના કાર્યકરો ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને ભોગ બનનાર પરિવાર સાથે તેમણે વાતચીત કરી હતી। તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે દવાની જરૂર નથી, દવાખાને જવાની જરૂર નથી, માત્ર પ્રાર્થનાથી જ બધું સારું થઈ જશે। મહિલાએ કબૂલાત કરી હતી। શું કબૂલાત કરી હતી તેના પતિએ જરૂરથી અમે તમને બતાવીશું, પરંતુ તેમના ચહેરા તમને નહીં બતાવી શકીએ। બ્લરમાં તેઓ શું વાતચીત કરી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ। थे तो आपको क्या बोला उन्होंने? यीशु धर्म में जाने से तुम्हारा तकलीफ खत्म हो जाएगा। तुमने घर पे आने के लिए मना किया था तो भी जबरदस्ती सबको लेके आते थे। वो लोग लेके आते थे ना। कौन वो लेडीज जो उधर पकड़ाई है वो लेके आती थी ना। और कौन सा चौक? जलालपुर का जो लिमड़ा चौक पे जो चर्च है वो चौक से लेके आते थे ये लोग, वो चर्च में से। तुमने बुलाया था? नहीं, हम नहीं बुलाए। तो क्या बोलते थे तुमको? ये औरत बुलाई थी। और तुमको क्या बोलते थे वो लोग? भूल जाओ। ऐसा कि चलो। तुमको क्या बोलते? आप घर के मालिक हो, आपको क्या पता है? मेरे को ही पता है, मैं उस दिन काम पे नहीं था। हाँ। इसने इसकी तबीयत खराब हुआ था तो ये रेखा बहन ने फोन किया था कि मैं जज वालों को उनको बुला देता हूँ, पास्टरों को, आपको प्रार्थना कर देगी, थोड़ा आराम हो जाएगा। रेखा बहन आपके संपर्क में कैसे आई? वो रेखा बहन संपर्क में वो जज में पहले से जाती है। वो तो बहुत पहले से। आप नहीं, मेरे आपके संपर्क में कैसे आई? मेरे ये संपर्क तो में अभी इसलिए- कब एक ये मेरे घर पे ना जैसे जाती ये इनका लड़का जो है ना ट्यूशन जाता है। ट्यूशन जाता है। हाँ, मेरा कौन सा? लड़का बड़ा- स्कूल जाता है। 7 हाँ, छोटा वाला नहीं लड़का है। कौन सी स्कूल में? छपरा छपरा। छपरा वाला। छापरा स्कूल में। वो लेके जाती है ना पढ़ाने के लिए लेके। हाँ। तो वो बोले कि आपका लड़का ट्यूशन पढ़ाता है तो मेरे भी लड़का को पढ़ा देगा। इसकी तबीयत खराब है तो वही बताने लगे, अरे तबीयत खराब है तो इसको यीशु मसीह में ले जाओ, ये ठीक हो जाएगी। तो यीशु मसीह में ले जाने से तबीयत ठीक हो जाती है। हाँ, ऐसा ऐसा तो अब क्या बोले? पूरी बात बोलो। आपको बोली ना, क्या बोले? आपको जो उन्होंने क्या बोला? तब मैं जब गई ना 1 महीना पहले, झूठ नहीं बोला। आपने बोला आपकी तकलीफ है। एक महीना सुनो जब सुनो, गई- आपने बोला आपको तकलीफ है तो उसने क्या जवाब दिया वो आपको? बोले कि आपको 1 महीना लगता है, चलो अगर नहीं आराम होगा तो छोड़ देने का। हाँ। तो फिर हम गए तो फिर ये लोग बोल दिए ना कि तो हम आपने उस दिन नहीं फिर समझाया? छोड़ दिए, भाई फिर नहीं। छोड़ दिए। हिंदू संगठन के लोग आगे उस दिन प्यार किया, कितने प्यार से आपको समझा के गए। हाँ तो आप बोलिए, फिर आप क्यों नहीं माने? फिर उसके मैं बाद मान फिर गया जाने हूँ। लगे। मोहल्ले के लोग और ऐसे हम आ गए। मोहल्ले के लोग सुनो 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 इधर। ओ चाचा सुनो, मोहल्ले के लोग और हिंदू संगठन ने आपको क्या बोला कि आज के बाद यहाँ पे ये लोग नहीं चाहिए? हाँ, आपने बोला आप आज यहाँ क्या करने आए जब आपको मतलब नहीं था? आप आ जाना। वो जबरदस्ती आपको बुलाते हैं, घर पे प्रार्थना था ना तो वो जबरदस्ती बुलाते हैं आपको। आप मंदिर जाते हो? मंदिर जाते हो? बोले भाभी जबरदस्ती जाते हो? नहीं तो किसी के बुलाने पे जाते हो? बोलाने को नहीं होता। तो फिर? और आपने अब मना कर दिया। हाँ। अब आप हमने प्रार्थना मना नहीं करने से किया। आपकी तबीयत ठीक हो गई। ये चीज गलत है कि नहीं हुई ना? मानते हो कि नहीं? नहीं हुई ना? ये चीज गलत है, मानते हो कि नहीं? गलत है कि नहीं? आपके एक पे बीमारी ठीक होती तो ये हॉस्पिटल खोलने का क्या ये जो करोड़ों खर्च करके लोग MBBS बन रहे हैं, रसिया जाके जो डॉक्टर पढ़ रहे हैं, वाली बात है, 1 रुपया भी नहीं हम लोग। उन लोग को कितना मिलता है? आपको नहीं मिलता है, उन लोग कितना मिलता है? पेट्रोल का दाम मिलता है। उन लोग को मिलता है। नहीं ना, उन लोग कितना मिलता है? कितना मिलता है? नहीं ना, आपको कोई किसी ने बताया पैसा? पेट्रोल का दाम हम लोग को मिलता है। जाते हैं वो लोग ऊपर जो सेवा में आती है ना, क्या सेवा मिलता है? जैसे लोग 10-20 डालते हैं ना, हाँ, क्या 10-20 कितना मिलता है टोटल? जैसे भवन पे जैसे 10-20 जो कोई जाता है कोई डालता है जो भी शक्ति हाँ, अनुसार हाँ। वही पैसा उन लोगों को। और जो गरीब चावल आदमी मिलता है आपको? चावल लाते हो वहाँ से? नहीं, ये सब कुछ नहीं। चर्च जाते हो आप? कुछ नहीं, ये नहीं जाते। चर्च नहीं जाते ये आप? नहीं जाते। आप जाती हो? हम नहीं जाते थे। ये 2 बार गई है। जबरदस्ती बुलाते हैं आपको चर्च? नहीं, वो नहीं, ये बोला। मतलब ये रेखा बुलाती है ना? वहीं सब वहीं बुलाते हैं ना? हाँ, यही लेके जाते। बुलाती तो वहाँ है ना, हाँ, ये वहाँ लेके। जलालपुर के लिमड़ा चौक में। हाँ, नहीं बोलते, अपने गाड़ी से लेके जाते। अपने गाड़ी से लेके जाती है। એટલે કે મહિલાએ કબૂલાત કરી હતી કે તેમને સતત દબાણ કરવામાં આવતું હતું કે જો તેઓ આ ધર્માંતરમાં જોડાશે તો તેમની તમામ તકલીફોનો
અંત આવી જશે. હિન્દુ સંગઠનના આગેવાનોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે વિજલપુર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ચોક્કસ મિશનરીઓ દ્વારા લાલચ અને ડર બતાવીને હિન્દુ ધર્મના લોકોનું ધર્માંતર કરવાનું ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે. અમે આવી પ્રવૃત્તિ ચાલવા દઈશું નહીં. સંગઠને પોલીસ પાસે માંગ કરી છે કે આ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરનારો સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે તેઓએ આ મામલો પોલીસને સોંપ્યો છે. આ પ્રકારના અવનવા સમાચાર માટે જોતા રહો સાયકલ મીડિયા સંચાલિત ઝટપટ ન્યૂઝ અને નવસારી લાઈવ. એવી કઈ હોસ્પિટલ છે જ્યાં કેન્સર માટે સર્જરીની સેવા હોય, કિમોથેરાપીની સારવાર હોય, રેડિયેશનની સારવાર હોય, પીટી સીટી સ્કેન હોય, કેન્સરની પેથોલોજી હોય, મેમોગ્રાફી હોય, એટલે કે બધું જ. હા, બધી જ સારવાર એક જ હોસ્પિટલમાં હોય. તે છે નવસારી નિરાલી કેન્સર હોસ્પિટલ.